So good evening everyone. Welcome to today's maths class. Welcome to class 8 as well. We are going to start your new chapter today. That is very first chapter. आपके स्कूल में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. बोलो आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? 8M01 So इंट्रोडक्शन. rational number. Rational number. Rational numbers. Rational numbers. You are going to learn properties of rational numbers in this chapter. Now, when I am teaching you students, please keep your books closed. When I am teaching you, keep your books closed. If you want to ask any doubt, first let me finish my portion. Right? The moment I'll finish my portion, after that you ask your question. Is this clear? Now, Sri Karan is Yes, sir. asking, sir, in which book we can write this? Formula book. I already told you. I will give you time to write. Don't write when I am writing. When I am writing, at that time, just pay attention and try to understand the subject. Please mute yourself. Otherwise, I have to keep you muted. If I'll keep you muted, then you won't be able to unmute yourself. So please mute yourself. Niketa, Nakshit, mute yourself. Next, you can see over here. Can you see this formula book here? Everyone, class 8, 8M01, this formula book. Can you see this or not on the screen? Yes, You sir. can Yes, see sir. it, We are able to. right? Yes. So don't. Yes, sir. Yes, every time you can easily determine whether we are writing in formula book and regular book with the help of this in the top right corner. Right? From top right corner, you can see this. Now, Okay. so before starting rational number, let me ask you, in class 7, you were knowing basics of rational number. क्या rational number के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता था? Yes, sir. पता है? Sure? Yes, sir. चलो, तो one by one शुरू करते हैं. हम सारे नंबर सिस्टम को रिवाइज करेंगे. वी आर गोइंग टू रिवाइज योर ईच एंड एवरी नंबर सिस्टम यू नो टिल नाउ. वेरी फर्स्ट नंबर सिस्टम यू कैम अक्रॉस. सबसे पहले आपने कौन से नंबर सिस्टम के बारे में जाना था? क्विकली. Indian number system. Indian number system. इंडियन नंबर. Indian number system. इंडियन नंबर. Natural numbers. Sir, Sir, natural numbers. Natural numbers. कहाँ से आ गए? Natural वही तो मैं numbers. सोच रहा हूँ. इंडियन नंबर कहाँ से आ गए? मतलब इंडियन नंबर अलग है एंड अमेरिका में नंबर अलग है, जापान में नंबर अलग है. आई थॉट व्हाट इज गोइंग ऑन? इंडियन नंबर सिस्टम. So first natural number system. Correct? Number system. हाँ. Natural numbers. Please. Natural numbers, whole numbers, One by integers, rational numbers. one by one, Adarsh. One by one. My question was only which number system you came across first. That is Okay, sir. natural numbers. Okay. Now, in natural numbers, who will explain me about natural numbers? Raise your Sir, hand. can I? Raise. Don't tell can I. Just raise your hand. Just I'll give chance to each and everyone. Just raise your hand. Yes, Adarsh. Tell me about natural numbers. The natural numbers are the numbers from 1 to 9. 1 to 9 only. 1, 2, 3, up to 9. Correct? Yes, sir. Not more than that. 10, 11, 12, they are not natural numbers. No, sir. Sure? Yes, sir. Okay. Anyone else? How many of you agree with Adarsh? Please lower your hand first. I'm removing your hands. Please lower your hand. Now, how many of you agree with Adarsh? Raise your hand. आदर्श ने बोला उससे कितने लोग एग्री हैं? ओके, सौम्या एग्रीज विद आदर्श. नेक्स्ट. ओके, तन्मय एंड श्राव्या क्या कुछ और कहना है? ओके, तन्मय, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स अकॉर्डिंग टू यू? Sir, the numbers starting from 1 to infinite are natural numbers. So according to तन्मय, नेचुरल नंबर सिर्फ 9 पे लिमिट नहीं होंगे. 10, 11, 12 ऐसा करके पूरा I thought different, sir, actually. That's right. 1 to infinity is the right answer. And yes, Shravya, what are you writing in chat box? Can you speak? Sir, counting numbers are called as natural numbers. Yes, counting numbers are called as natural numbers. ऐसे numbers जिसको आप direct count कर सकते हो. 1, 2, 3, 4, 5, ये सब आपके natural numbers हो जाएंगे. Is this clear? Right? So Yes, sir. 0 is not your natural number. Negative number भी नहीं आएगा. Now what I want to ask you, क्या 5.6 आपका natural number होगा? No, sir. No, sir. Karan? No, sir. No, sir. No, sir. No, sure. No, sir. Okay, 5.6 is not your natural number. Now one of the student is joined with only symbol of smiley. Please rename yourself. Otherwise I have to remove you.
स्माइली के सिंबल से कौन ज्वाइन हुआ है? प्लीज रीनेम योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल रिमूव यू. Okay. Last warning. Last warning. I'll count till 5. 5, 4. Sir, they left the meeting. Hello. Now, natural numbers के बाद आपने क्या पढ़ा था everyone? Yes, Amisha. Sir, whole number. Whole Whole number. Whole numbers. numbers. Okay. whole numbers. Amisha, can you tell me the detail about whole numbers? The whole numbers are the numbers starting from 0 till infinity. Infinity. So according to whole numbers, according to Amrita, whole numbers are starting from 0 to infinite. 0, 1, 2, 3, infinite. That means in natural numbers, if I am adding 0, then after adding 0, this will become whole number, correct? Yes, sir. 0 plus natural Yes, sir. Yes, sir. Okay. Everyone agree with Amisha? Everyone Yes, agree sir. with Yes, sir. natural number 0, whole number. Not any doubt in it, right? No doubt, sir. Great. Yes, no doubt. Great. Now, after whole number, which number system you learned? Raise your hand. Don't be raising Sir, hand. Fractions, integers. fraction. No, fractions. Roman number. Roman number. Fractions. Only raise your hand. Only raise your hand. Fraction. Only raise your hand. Only raise your hand. Only raise your hand. Yes, Sunena. Can you tell me? Sir, can I? Yes. Tell me, Sunena. Sir, we learned fractions after that, not integers. Roman. But before fraction, we learned integers, na? And Yes, sir. No, like sir. Yes, sir. No, Sir, sir. we learnt it. We Sir. learned. Sir, we learned fractions before, sir, but in the line, sir, natural numbers, whole numbers, and then integers, sir. Okay. Yes, sir. Fractions come I after. don't know Yes, if sir, you have integers. 7th book. So maybe. So actually, fractions is not there, I think. So wait. And Roman numbers are not part of number system, Rajat. Rajat is telling again and again, sir, Roman numbers. But Roman numbers are not part of your number system, right? Roman numbers are like this, na? 1, 2, right? 3, 4, but those are not part of number system. Now, okay. So now let me talk about integers. So who will brief me about integers? Raise your hand. Raise Sir, your can hand. I? Only raise your hand. Only raise your hand. I'll give chance to everyone. Okay, Ragini, can you tell me about integers? Yes, sir. Integers are whole numbers and they are negatives also. Okay, whole numbers and their negative. Okay, what do you mean by negative? So negative means adding the minus sign and they will come on the left side of zero, like Okay. -1 or -12. -3, like that, right? So Yeah, sir. according to you, integers are something like this 0, 1, 2, 3, and -1, -2, -3, correct? And Yeah, sir. They both will stretch towards infinity. on positive end, we will be having minus infinity. On negative end, we will be having on positive end, we will be having plus infinity. Yes, sir. And on Yes, negative sir. end, we will be having minus infinity, correct? Yes, sir. So Yes, Yes, sir. sir. integers are all positive numbers as well as negative numbers, including 0. Is this clear, everyone? Right? Yes, sir. Zero. Sir, integers includes whole numbers and natural Yes, numbers, Then No, whole Yes, numbers, sir. numbers, negative. and some negative numbers. whole numbers and negative numbers. Only whole numbers and negative numbers. Because if you are taking whole numbers, if you are telling whole numbers, natural numbers are already being added in whole numbers. Then no need to mention natural number again. Is this clear? These are Yes. particularly called. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Okay. After this- Negative integer. After this, we are going to learn about fraction. But before that, note down these things. Note down this chart and leave some space. See, leave some space on right side because right side we are going to write now. Okay. The how you can see on the screen, just write like this only. Okay. Make chart quickly so that I can take your attendance now.
Sir, should we write it? Yes. I am giving you 5 minutes to write Sir, in formula book. in formula book. Okay. Now I am taking your attendance. Okay. Now Siddharth, bring. Sir, Now, yes, Rohit. sir, right side space is not left, sir. अच्छा मतलब आपने राइट साइड पे स्पेस नहीं छोड़ी है, राइट? सर स्पेस नहीं बचा है सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लिख मैं नीचे लिख सकते सर उसको ये। नीचे लिखना, हाँ मैं समझाऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है? ठीक है सर। नाउ सी हियर एवरीवन, इंटीजर के बाद आपने पढ़ा था फ्रैक्शंस। इंटीजर्स में फ्रैक्शन जब आप ऐड करोगे तब जाके वो आपके रेशनल नंबर्स बनेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Integers, this integers plus fractions will become your rational number. Please mute yourself. Yes, Santosh. You have to message Vishnu sir that your name is not there in LMS. That's okay. Next. Okay. But what is classification of fractions? How these fractions are classified? That we need to understand now. Right? That I will explain you. See, these fractions are classified into three subsections or three sub-portions. See here, very first section is proper fraction. Next is improper fraction. Don't write at this time, just understand. And the last one is mixed fraction.
Now, yes, Purvi, I'll come to your definition part as well. Now, rational number की exactly definition ये है कि ऐसे number जिसको आप p by q form में लिख सको, the numbers which can be represented in the form of p by q form, where p and q both are integers. P and q both are integers, and q should not be equal to 0. Now tell me why q should not be equal to 0? q को हम 0 क्यों नहीं ले रहे हैं? Sir, it would not be So defined. that means it would Sir, it will be a not defined. fraction. Sir, it will be Rational undefined. number. Where Sir, it is not defined. Not It will defined be and undefined. it's not possible also. Sir, division by Because zero is not divide by division by 0 is not defined at all. Okay, division by 0 is not defined. Now again, ये smiley नाम से कौन है भाई? Smiley नाम से कौन है? Please mute yourself. Please unmute yourself and tell me your name, otherwise I have to remove you. Rename yourself ना. Smiley से कौन है भाई? I can block you, student. He has been left, sir. हाँ, next time उसे आने ही नहीं दूंगा. Wait. Okay. यहाँ तक clear है everyone, right? Now, do you know about these words? Proper fraction, improper fraction, mixed fraction. Yes, sir. We know. Sir, yes, Yes, sir, sir. yes, sir. Okay, who will tell me about proper fraction? Sir, can I? Sir, can I? Sir, Sir, can I? Can I? Just raise your hand, na? Don't tell can I. Just raise your hand. I'll give chance to each and everyone. I already told you. Kishore, tell me. Yeah, sir. Sir, proper fraction means, sir, where numerator is smaller than the denominator. Sir. Okay. So I can say here p by q is there. So p is smaller than denominator, correct? So Yeah, sir. okay. Now Rupa, can you give me example? Yes, sir. Okay. For example, 2 by 3, 1 by 2, 2 by 3, 1 by 2. 6 by 5, sorry, 6 by 10. 6 by 10. Okay, fine. Now next, improper fractions. Okay, who will tell me about improper fraction? Sir, Siddharth, can I? I'll give chance to each and everyone. Siddharth, can you tell me about Yes, sir. Sir, those are in the form of p by q, and q is greater than p. So he said p is greater than q. P is greater than Q. Very good. Can you give me example? Yes, sir. Sir, 3 by 2. Okay. Sir, 10 by 4. Okay. Sir, 13 by 7. Okay. So thank you, Siddharth. Now, Pragati, can you tell me about mixed fractions? Sir, mixed fractions are the fraction when there is a whole number, numerator plus denominator. Okay. Suppose it is x integer p by q, correct? Whole number. Sir, and I numerator can't is hear correct. you properly. As per you told whole number, numerator and denominator. That means it is something like x plus p by q, correct? Yes, sir. Right? X p by q. Can you give me a few examples? Sir, 4 is the whole number, then 3 by 7. Okay. 4 integer 3 by 7. Yeah. Okay. Now see here. In other words, we can convert your improper fraction into mixed fractions. Yes or no? Everyone. Yes, sir. We can convert mixed- Expansion. Yes, sir, Expansion. we can convert it. Okay. How we can convert 3 by 2? Tell me. How Sir, we by can convert- dividing the Huh. denominator by dividing. numerator. If I'm dividing 3 by 2. Sir, by dividing 2 by 3. It's 2 by 1 by 2. Sir, one Sir, one It's by 1 by 2. Yes. So it is 2 ones are 2 plus 1 3. Correct? 2 ones are 2 plus Yes, sir. 3. Now if I talk Yes. about 10 by 4. 2 4 2 Sir, by 2 by 4. 8. 2 by 4. 8. 2 by 4. Why you are telling 2 by 1 by 2. first? 4 into 2 plus 2. Hey, relax. First, you need to hear me clearly. Listen carefully. First, you need to learn the pronunciation. 2 by 4, this is not the correct pronunciation. You need to pronounce it like this. 2 integer 2 by 4. Are you getting my point? 2 integer 2 by 4. Is this clear? Please give me some. Yes, sir.
Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. This everyone, Yes, right? sir. How we will pronounce 2 integer 2 by 4. Next. Now 13 by 7. 1 integer 6 by 7. Very good. 7 ones are 7 plus 6. 1 integer 6 by 7. So is this clear, everyone? Yeah, sir, clear. Yes, So this sir. is nothing but your revision Yes, sir. as well as chart. Okay. So now draw the remaining chart as well. Right. Earlier you have drawn the chart. Sir, it's not fitting in the page, so what should we do? Let me tell you. Wait. Yes, Shravya, very good. If it is not fitting in the page, just do one thing. You can write like this. See, you have written till integer, correct? Yeah, sir. After that, you can write this much. This much can fit in the page. Only integer plus fraction is equal to rational number. You can write like this. Sir. Yes, sir. Yes, sir. And you Sir, can can you bit zoom Yes, out? sir. Sir. and you can write this fraction in the right, portion below. Please mute yourself. Yes, sir. Now it is correct. Okay. Is this clear, everyone? Please give me some response. How you have to write in your notebook? Yes, sir. Okay. Sir, can you repeat it? Sir. Okay. Quickly note down this, everyone. Quickly note down. Sir, can you repeat? Can I what? Sir, can you repeat how to Sir, do it? please repeat how to. Okay. See. See. Already in your page you have written like this much, right? Integer. Yes or no? Yeah, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. After this integer, write this plus fraction and is equal to rational number. That's it. Integer plus fraction equal to rational number. Don't write this classification of fraction as of now. Right? You have to write classification of fraction here below as separately so that it can fit in your page. Are you getting my point, everyone? So in your Yes, sir. write like this: integer plus Yes, sir. fraction equal to rational number. Below you can write classification of fraction. Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. I am not. Yes, you are not what? You are not what? Your voice was breaking. You are not getting. Yes, sir. Not getting properly. Now you are getting, everyone. You have to write like this only, like this. Natural number 0, whole number integer you have written. Write what you are seeing on board now, what you are seeing on screen. Integer plus fraction will give you rational number. And beneath write the classification of fraction. That's it. Clear? Now this can be fitted in your one page. Yes, sir. Clear now, everyone? Quickly. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now. Yes, sir. Okay, note down this quickly. First note down this, then I will show you fraction. Excuse me, sir. Yes. Sir, can you see my video, sir? Yes, Rohit. Sir, I have written like this, sir. Fine, fine. Sir, can you scroll it down a I am bit? writing classification of fractions, sir, Okay. downwards, sir. Okay. I have written here what types of fractions are there, sir, and I am writing there. Okay. Sir, by mistakenly, I continuously Fine. write down your. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, like this I write. By Okay, mistake. Yukti. Nice. Sir, can you go upwards? Okay, Yukti. Fine, fine, Yukti. Sir, by mistake, I write at the right side No of the problem. page. No problem. Sir, I am writing the fraction classification in the next page. Can I? No problem. Why not? Why not?
Sir, can you scroll up? Okay. You want me to scroll more upward, or this much is enough? Yes, sir. Now, okay, sir. Once you finish, just tell me so that we can see questions. Sir, Yes. Sir, actually, I have a doubt. Sir, when you told to leave space on the right side, so I had space on the right side, so I wrote it on the right side only, the Yes. fraction. That is perfect, exactly. yes, sir. I too had space. Yes. Very good. Then right. If Sir, you- mine completed, sir. Yes. If you are in space, better to write on that side only. Okay. Sir, mine completed, sir. Great. Okay. Can we start? Question please, Completed. everyone. No, sir, please wait. Yes, sir. Okay, I'm waiting. sir. प्रवलिका की सिस्टर कहाँ चले गई? आप देखने फाइल ಮುಖ ತಗೊಳಕ್ ಬಂದ ಇನ್ನು 5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. ಇಲ್ಲ ಬರ್ಸಿರೋದ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. मैं निकाल दूंगा मीटिंग से, म्यूट नहीं रहती. पूजा क्लियर है ना? पूजा हाँ सर क्लियर है. हाँ सर, पूरा क्लियर है. पूजा आप ही प्रवलिका की सिस्टर हो ना? हाँ सर. सॉरी वो वीडियो नहीं दिख रहा था इसलिए. श्राव्या बहुत टेंशन में लग रही हो भैया की वजह से. भैया की एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, पता चला कि नहीं? नहीं सर, हाँ सर पता चला पर टेंशन में नहीं हो. अच्छा, बाकी भैया टेंशन में है. हाँ सर, वो वही सोच रहा है कि पोस्टपोन हुआ, अभी कैसे करेंगे वो सब. ठीक है, जैसे अभी तक करते आए हैं वैसे ही करेंगे हाँ और सर. मेहनत करेंगे और क्या. सुनैना इज टेलिंग आई हैव रिटन हॉरिजॉन्टल इन रूल बुक. चलेगा? सर डन. ओके. तो चलो बाकी जब तक बाकी स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, लेट मी आस्क श्राव्या. श्राव्या, आप हर्षा के साथ लड़ाई करते हो कि नहीं? सर करती हूँ पर फिर 2-4 मिनट के बाद फिर फ्रेंडशिप हो जाता है. कौन ज्यादा मारता है, आप ज्यादा मारते हो कि हर्षा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है जो छोटे भाई बहन होते हैं वो ज्यादा मारते हैं. तो आई थिंक सर ऐसा नहीं है, हर बार नहीं. एग्जैक्टली सर. सर प्लीज स्क्रॉल अप. यस. कितनी बार स्क्रॉल अप करूं भाई? मैं स्क्रॉल अप डाउन कर करके थक गया. स्क्रॉल अप डाउन. Sir, I want to do mixed fractions one, sir. Sir, if you want, you can zoom out. हाँ मैं जूम आउट करूंगा, बट जो मोबाइल में देख रहे हो ना फिर नहीं दिखेगा अच्छे से. ओके. Sir, we can zoom in. हाँ Sir, सर. we मोबाइल में जूम इन कर सकते हो. Sir, we can zoom in mobile. वेरी मच एडवांस. आप सब में से किसके साथ बड़े भाई बहन हैं? Sir, I am showing my video. Sir, I also have a elder sisters. ओके. आप लड़ाई करते हो कि नहीं आपके बड़े भाई बहनों से, एल्डर ब्रदर? Sir, Adarsh. Sir, Adarsh even has a elder sister. हाँ, जिसके भी बड़े भाई बहन हैं मैं आपको बता रहा हूँ. हाँ तन्मय, जिसके भी एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हैं, खूब लड़ाई करो, बहुत मारो उनको, बहुत मारो. पता चल रहा है? Sir, हम ही पीटते हैं सर. हाँ. अरे मेरे घर में तो उल्टा था, मेरी छोटी बहन है, हर बार सर मेरी भी छोटी बहन है. इतना मारती थी. Sir, सर मेरी same. भी छोटी बहन है सर, Same बहुत here, मारती है sir. सर. सर बहुत मारती है. फिर क्या होता है पता है? सर मेरा फिर जब मैं मारने जाता था ना, वो डायरेक्ट जस्ट एक्टिंग करती थी रोने की. पापा मम्मी. सर मम्मी आके हमें सर वो भी आके हमें Exactly, सर. तो मतलब मैं तो छोटी सिस्टर. सर बहुत चालाक है सर. बहुत चालाक है. आप भी चालाक बनो. हाँ, सर. Sir, I have a younger brother. younger brother है, then you are in loss.
वो आपको बहुत सबका मारेगा। मम्मी को उनका छोटे No, sir, he's very quiet, sir. Very Sir, quiet. he's very quiet. He's not एक्टिंग करते सर जैसे fighting. He doesn't do fight. He is just quiet. Great. सर great. मम्मी पापा हमेशा भाई बहन के सपोर्ट में जाते हैं सर। Okay, पूर्वी। हाँ सर हाँ, बड़े sir. कोई डांटते हैं छोटे सर बच्चों का सपोर्ट लेते हैं। सी अगर आप यंगर ब्रदर। सर मेरे पास फुल एक्सपीरियंस है सर। ग्रेट। सर थोड़े सालों पहले मुझे सपोर्ट मिलता था, अभी मेरी बहन को मिलता है। अभी मेरा भाई वो 6th स्टैंडर्ड है सर, कुछ किया था मेरे मम्मी को बोलता है सर, तब मेरे मम्मी बोलेगा वो छोटा बच्चा है, तू देख कितना हाँ। गधे का जैसे बड़ा हुआ है। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, आपके बड़े भाई बहन उसको मारो, वो लोग जब आपको मारने हैं तो रोने लगो, मम्मी पापा, फिर मम्मी पापा के उन्हीं को डांटेंगे। सर अभी बहुत we बड़े are हो not गए, very मम्मी small, पापा sir. को पता चल जाता है। ऐसे रोते हैं करके डांटते वापस। हम कुछ भी करें हमें ही डांट पड़ता है सर रिवर्स में। ठीक है, यू आर लाइक मी ओनली, यू आर लाइक मी अनलकी गाइस, कि भाई बहन से भी मार खाओ, मम्मी पापा से भी मार खाओ। तो चलो हम बैठे बैठे क्वेश्चन ही करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये हो गया एवरीवन, क्वेश्चन शुरू करें। यस सर, डन। Yes. डन सर। शुरू आप कर अपना मुंह बंद कर दो। अच्छा वृंदा, वेरी गुड वेरी गुड। तो वृंदा आप मौर्य को मारते हो कि नहीं? Sir, I've done it. हाँ। वृंदा मौर्य तो बहुत सीरियस है, मस्ती ही नहीं है। हाँ, आप उसे मस्ती कराओ अच्छे से। सर नाउ शुड वी डू इट, नाउ शुड वी डू Yes. इन बुक? Yes, now regular book. ओके सर। Now open your regular book. ओके सर, वन सेकंड। Okay, sir. तो मौर्य का क्या रिएक्शन था वृंदा? Sir, is this the heading? एक एक करके yes no yes this is heading prerequisite exercise regular book chapter 1 only। पहले regular book में आपको सेम लिखना है, chapter number 1 heading chapter number 1 8M01 rational numbers, in that heading prerequisite exercise। Sir, this is heading. अच्छा, Sir, 8M01 we should write. yes 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 you should write yes now okay। अच्छा आदर्श, अनुश्री आपकी सिस्टर है राइट? वही मैं सोचूं आदर्श कि ये सरनेम कहीं देखी देखी लग रही है। एग्जैक्टली अनुश्री नीट में है राइट? मैं जेई में पढ़ाता हूँ इसीलिए। नीट सर। हाँ हाँ ग्रेट, आई नो yes you should write this heading prerequisite exercise। Sir, for the formula book, what should we read? The Yeah, heading? regular book regular book regular book Sir, in- regular book Sir, in formula book you had written prerequisite something. What Yes. was that? same prerequisite exercise। First we have written formula of prerequisite exercise, then in regular book we Sir, have we should write their upside, sir. Prerequisite exercise. yes heading is Sir, you should have told first, sir. I have. no It's issue। full. Sir, I also No not issue at written, all. sir. Sharp excel, mistakes are always good, don't worry at all if you are not Sir, written, sir. write now। Sir, can we write that above the red margin, sir? Yes why not, do it quick, increase your speed। Yes, sir, I written. have done that. Sir, done. Sir, done. Done. Sir, written. Done. Done. Yes, sir. Done। Okay, this is your first question। Can you see this table in your module? If you are having module, Yes, sir. table, Yes, sir. Should we write in the module? with pencil। Okay, now see, now tell me, Sir, which this is one. your natural number? Sir, we should write the question. No, just see on the screen. As of now, don't write the question, just on the screen। Mute yourself, otherwise Sir, I should we will- do this in the text, in the module, or in the class, in the book? Yes, sir. as of Sir, now, I have completed the first exercise in Yes. textbook. as of now you are having a module, you can do it in module। If you are not having module, please pay attention here only। I'll give you time to write, you don't have to write now, right? Just pay attention to the answer। Is Sir, I am not having module, sir. Yes Rohit, so that's why I'm telling you to pay attention here na, don't worry, right? Whenever you get time, get module from Vidyanagar। Now 0 is natural number। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. It is a whole number. Is it Sir, it is a whole number. Yes, it is an integer. Yes, sir, it is an integer. Yes. rational number? No, Yes, sir. Yes, sir. Yes, It sir. is a rational number.
Yes. Now, No, what- sir. Okay, who is telling no for rational number? Danush Gowda. Sir Dhanush Gowda. Yes, you are having any doubt? No, sir. Okay. See, every natural number is whole number, every whole number is integer, and every integer is rational number. Is this clear? Yes, sir. 0 is also rational number because I can write 0 as 0 by 1, right? Or 0 by anything. Any number Sir? is it is and p by q, it is rational number. Yes. So I had a doubt in this exercise, question number 5, sir. So let me come to question number 5 first, no, Adarsh. Okay, sir. Wait till then, right? Okay, sir. Okay, thank you, Adarsh. Now next, for 2, Akshit. Can you tell me 2 is natural number? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Only Akshit. Yes, sir. Only Akshit. Yes, sir. Any Yes, sir. number? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. It is the whole number. Okay, is it integer? Yes, Yes, sir. Yes, sir. And Is it rational it's number? also a rational number. Yes, sir. Yeah, There is sir. a rational number. Okay. Now -3. Manyata, -3. No, sir. No, sir. Not a rational number. No, Only sir. Manyata. Whole number. Only Manyata. Only No, sir. No, sir. Okay. 1.23. Mridul. 1.23 natural number. No, No, sir. No, No, sir. sir. Not a How rational. many Mriduls are here? How many Mriduls are here? Only Mridul. -3. No, sir. So it's 1.23, Now, sir. sorry, 1.23. 1.23 is whole number, Mridul. No, sir. Okay. Is it integer? No, sir. Is it rational number? Yes. Very good. Because 1.2 by 3 we can write in fractions. Yes, 123 by 100. Okay, Rajat. Yes, sir. Rajat, can you tell me about 9 by 5? Yes, sir. Sir, 9 by 5 is not a natural number. Whole No, sir. number? Not a whole number. Integer? Yes, sir. No, sir. Not an integer. Rational number? Yes, sir. It is a rational number. 0.05? Yes, sir. It is a natural. No, sir. Not a rational number. Whole number? No, sir. Okay, now Siddharth will answer. Integer? No, sir. No. Okay, Rohit, is it a rational number? Yes, sir. Okay. Now, Niketan, can you tell me Yes, sir. -2 integer 1/3 is natural number? No, sir. Is it whole number? No, sir. Okay. Adarsh, can you tell me is it integer? No, sir. Is it rational number? Yes, sir. Okay. Now, Purvi. Purvi, can you tell me 0.67 is natural number? Purvi? So I'm audible? Yes, Purvi, you are audible. Yeah, so 0.67 is not a natural number. Thank you, neither a whole Purvi. number. Wait, Purvi. Okay. Now, Yukti, can you tell me is it whole number? No, sir. Oh, great. Can you hear echo? Sir, everywhere? she is using two. Yes, sir. She is using two devices. Okay, Divyesh. It was so amazing. Yes. Divyesh, can you tell me is it integer? No, sir. Okay, Nitya, can you tell me is it rational number? Nitya? Samarth, can you tell me is it rational number? Yes, sir. It's a rational number. Great, great. So all the numbers in the tables are rational numbers. Yes. So everyone understood the difference? Please give me some response. Yes, sir. Everyone Yes, sir. now, Yes, sir. Sir, yes, sir. Understood, sir. Sir, I have a Understood, doubt. sir. wait. First note down all these things in your module. If you are having module, note down in your module. If you are not having module, then note down in your book, but don't take so much time by making this table, right? Don't waste so much time in making this table. Are you getting my Sir, point? in RB, in regular book we should write, sir. Module. One by one you ask, one by one. Yes, Rohit, ask first. Sir, we should write in regular books, sir. Yes. Or rough book we can write, sir. Regular book. Why rough book? I haven't told you to write in rough book, right? Yes. Regular book. only. Yes. Sir, if we are having a module, then also we should write, sir, in this all. No.
note down in module only. Students who are not having module, just note down somewhere else. Then you can again copy it in module whenever you will. Sir, get in the module. Vidyanagar module books are available, sir. In Vidyanagar means Avanti office is in school, school is in Vidyanagar, like that. Sir, yes, sir. Clear? Okay, I think all Okay. the Vidyanagar students got module, correct? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We have got module of 9th to 10th, sir. 9 to 10. DVS, you got module of class 9. No, sir. We asked to sir means they told no, you should take this one also. That's why they told take this one also. Then. This one also, that means previous module. Old module. Few 1, 2 extra books we have given to you. That only, na? Okay, sir. Why you guys are getting confused? Sir, why we got some extra book? Daksh, your voice is not coming clearly. Can you type in chat box? Sir is asking why have we got 2 extra books? For reference. Previous modules only. Previous modules. They are not exactly. They are not completely useful to you. Okay. Sir, we can use them if Ah. one of our modules get lost. When your modules are getting lost, at the time you can use them. You can share with your friends who are non-Avanti students, right? Those are exactly. Yes, sir. Sir, I have a doubt. Yes, ask me. Sir, why -2 1/3 is not an integer? See, for integer, it should not be fraction. -2 integer 1/3 contains fraction. Since it It's contains a mixed fraction part, fraction. so it is Yes, sir, it's a mixed fraction. okay. Okay, sir. Thank you. Yes. Now Brinda is asking, sir, but I got only one extra book. See, students, see. Let me explain you here. About your module confusion, let me clear you this. Please mute yourself, everyone. Please mute yourself. Sir, there is nothing, sir. 5 books and 2 extra books, sir. Please mute yourself, everyone. Thank you. See, we have given these 5 modules to each and everyone. Are you getting my point? With your class 8 admission, each and every student Yes, has these 5 modules only. This is the requirement. With these 5 modules, you can learn your class 8 easily. Is this clear? Right? Now, in the stock, we were having already previous year modules. Previous year or previous to previous year modules. Previous to previous year modules particularly. So we need to empty this stock. So what we have done, according to the availability, we have given these modules. Few students have received 2 books extra. Few students have received 3 books extra. Few students have received 1 book extra. Few students have received 0 books extra. Is this clear? Now, what is the meaning of this extra book? You don't have to read anything from this extra book. Is this clear? This extra book, just share with your friends. If you want to share with your friends, you can share. Share with your friends. Or you might be having good friends in your class, na? Best friends. You are telling bestie, bestie, she is my bestie, he is my bestie, like that. You are fighting for them, each other. Hi, Anna, everyone. So you can give to Yes, your sir. bestie and you can and you can tell him or tell her that, see, you are my bestie, na? That's why I am giving you. Don't. So you are giving us ideas, sir, to fight Yes, with I'm our giving ideas. sister and to So- make up with. Sir, my bestie is here only, sir. How should Oh, I give up? no, non-Avanti bestie. The bestie who is not in Avanti. Okay, so just give them and tell them, enjoy. See, you are my bestie, and you can make a gift if they are coming their birthday. अगर उनका birthday आ रहा है, आप मस्त एक gift wrap करके उसको साफ करके अच्छे से gift pack करके दे सकते हो. Hi, Sir, thank you for the gifts. Sir, I got Sir. Yes, sir. I got modules. My bestie told I want your book, Max book, sir. Sir. One day, sir. So Rupa, if you are having extra, तो दो, नहीं तो मत दो. Right? Now, Yes, sir. Shravya is telling, sir, तो वो free में अवंती का books use करेंगे. नहीं, मैं frankly बता रहा हूँ books का क्या होगा.
अगर बुक्स यूज करना होता ना उनको, तो वो कहीं से भी लेके कर सकते हैं। आपके सीनियर्स भी तो पढ़ चुके हैं ना अवंती में, हाँ या ना? आप उन्हें बुक्स गिफ्ट करोगे ना, हाँ सर। मैम नहीं बुक- सर, ज्यादा से ज्यादा बस एक दिन काम आएगा। हाँ वो बुक्स बस उनके ड्रॉवर में पड़े रहेंगे, क्योंकि ये बुक्स अकेले कोई नहीं कर सकता, कोई टीचर चाहिए कराने के लिए। नहीं तो अगर बुक्स अपने आप हो जाते तो अवंती में बस आपको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते, आशीष सर नहीं होते आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए। सर जो अच्छा हाँ। पढ़ते हैं वो एक दिन एक वीक करेंगे, सर। ना सीधा ड्रॉवर। Yes. सर क्योंकि ऑलरेडी हमने आंसर सब मार्क करके रखा है, तो हाँ उनको पता रहेगा ऑलरेडी आंसर। यस यस ओके, इज दिस क्लियर? एंड किसी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है मेरी बेइज्जती हो या नहीं हो, ये बुक मुझे गिफ्ट नहीं देने, तो मत दो, अपने आप रखो। ओके, नाउ सो शैल वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? सर यस सर, Yes, स्टार्ट sir. सर। सर हाँ बोलो। सर टाइमिंग्स क्या है सर मॉड्यूल्स लेने के लिए? किसका मॉड्यूल लेना है? सर इन सब का मॉड्यूल्स लेने के लिए टाइमिंग कब है सर? हाँ मुझे ये बताओ, आप कौन सी टाउनशिप से हो रोहित? सर मैं वीवी नगर में। Sir, it is echoing. Sir, हाँ वेट, sir, I am literally dying, sir. I am wearing my वो किसका ear. इको हो रहा है? ये कौन बोल रहा है? तो इको हो रहा है, मजा आ रहा है। वन मोर टाइम, पीछे सर बैकग्राउंड दे रहा है। हाँ, मैं वीवी नगर जिसके में भी- रहता हूँ सर। हाँ मॉड्यूल्स लेने का टाइमिंग कब है हाँ, सर? रिलैक्स रिलैक्स बता रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ, रिलैक्स रोहित। जैसे ग्रुप में ठीक है विष्णु सर ने मैसेज डाला था ना, विष्णु सर ने ग्रुप में सर message मैं डाला था, आज ज्वाइन हुआ हूँ सर। रिलैक्स रिलैक्स, मुझे बोलने दो रोहित, राइट? सी डोंट वरी रोहित, डोंट वरी, भले आप आज ज्वाइन हुए हो। सी हाँ रोहित, जो आपने स्टार्टिंग में लिखा है HST स्टूडेंट एंड आज ज्वाइन हुए हो, वही ना? राइट नाउ हाँ। सी, विद्यानगर स्टूडेंट्स के लिए हमने ग्रुप में ऑलरेडी लिखा था, विद्यानगर स्टूडेंट्स कम ऑन दिस डेट एंड फ्रॉम बिटवीन दिस टू दिस टाइम एंड आके ले लो। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, सेकंड थिंग, उसी तरीके से बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हम लिखेंगे कि वीवी नगर और आउटसाइड विद्यानगर स्टूडेंट्स कौन से दिन आना है और सारे मॉड्यूल्स कलेक्ट करके जाना है। क्लियर? हाँ सर ठीक है सर। इज दिस क्लियर? हाँ यस। Sir, now next. सर में जो आ रहा था, इट वाज लाइक सॉन्ग। यस श्राव्या, हाँ बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एवरीवन। सर इसको कहाँ सॉल्व करना है रेगुलर बुक में? So I can do that echo, sir. You have to join from 2 devices, sir, and unmute, sir, and start And done. talking, sir. हाँ And done, sir. Khatam. हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 2, वी नीड टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। लेट अस राइट फर्स्ट क्वेश्चन, 5/4 Sir, प्लस माइनस we should solve it in regular book. रेगुलर बुक, सब रेगुलर बुक में है भाई, सब रेगुलर Oh, sir, बुक। but okay, sir. गलती कर दी मैंने आपको फॉर्मूला बुक रेगुलर बुक बोल के, इधर हाँ, दिख sir. रहा है, यू कैन सी हियर रेगुलर बुक, ये कर्सर देख रहे हो? कैन यू सी द कर्सर? कैन यू सी दिस रेगुलर बुक? मैंने Yes, पहले ही बोला yes, sir. सारी फॉर्मूला बुक में लिखनी है, Sir, सारे relax, क्वेश्चन रेगुलर sir, बुक में relax. लिखने हैं। ये क्वेश्चन है कि नहीं? ये प्रॉब्लम है कि नहीं? प्रॉब्लम है सर तो रेगुलर बुक में ही लिखना है आपको ना। वॉइस ही Sir, चाहिए। relax, sir. Sir, हाँ relax. सर, रिलैक्स। हाँ, आप रिलैक्स होने नहीं देते हो। हाँ, हर एक क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो रेगुलर बुक या फॉर्मूला बुक। दिख रहा है कि हम रेगुलर बुक में लिख रहे हैं। हाँ, चलो नेक्स्ट। हाँ लिख सकते हो युक्ति, नो प्रॉब्लम। चलो 5/4 प्लस माइनस 11/4, वृंदा कैन यू टेल मी सिंप्लीफिकेशन? Yes, sir. बोलो वृंदा। So here both the denominators are equal, so it's easy to do. Yes. Plus into minus, it becomes minus. Minus. 5 minus 11. What is 5 minus 11? It's minus 6. Minus 6/4. Minus 6/4. Can we simplify minus 6/4 further? Yes, sir. Minus 3/2. Minus 3/2. Can we simplify minus 3/2 further? Yes, sir. Minus 1/2. Minus 1 integer 1/2. Now this is wrong. Minus 1 integer 1/2. This is wrong. So Brinda, very good till this point. Very good till this point.
Now this is the common mistake which each and every student is doing. Are you getting my point? Whether it is class 8, class 9, class 10. Sir, yes, sir. This total adds up to -1. Yes, please pay attention over here. Everyone, pay attention over here. Let me explain you this. Why this is not true. -1 integer 1/2. It is -1 into 2 plus 1/2. Am I correct? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. -1 Yes, is -2 plus 1/2. -2 plus 1 minus 1/2. So if you simplify this, your final answer will be -1/2. Understood, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Please. Sir, I didn't get it. So then we can't. Sir, I can't understand this. See, who is this girl who told I can't? Sir, Pragati. No, sir. How many? I told only one time. Okay, means Sir, it is using 2 devices. Sir, please remove anyone who has 2 devices. That, Next time I'll be deaf if I hear this Rupa, one. are Sir. you using 2 devices? Correct. No, sir. Okay. Sir, if they are using 2 devices, let them disconnect audio in one of them. जैसे वांडा विजन अगर बॉलीवुड में होते तो वो चील हिल साइड पे जाते. मान लो ये हिल है, दिस इज वन हिल. Echo. इधर Yes, पहुंच sir. गया विजन, बोल रहा है वांडा वांडा वांडा. इधर ये दूसरी हिल, यहाँ पहुंच गई आपकी वांडा. वांडा बोल रही है विजन विजन विजन. ये ऐसा चल रहा है क्लास में. Are you getting my point? Sir, if they are using 2 devices, tell them to disconnect the audio in one of them. That only I'm telling. So if Vanda and Vision sir. Bollywood, हाँ बोलो. सर मैं ये सब पेन से लिख रहा हूँ सर. ब्लू पेन से लिख सकते हैं ना सर? हाँ क्यों नहीं, ब्लू पेन से लिख सकते हो. मैं वापस समझा रहा हूँ, सुने ना, वापस समझा रहा हूँ. पहले हम थोड़ा वांडा. Okay, sir. हाँ वही श्राव्या, इसीलिए तो मना कर रहा हूँ सबको. ठीक है, चलो अब समझो इसको. ये चीज वापस समझा रहा हूँ मैं. एवरीवन, श्रीचरण इज टेलिंग माय वॉइस इज लो. श्रीचरण, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, मेरा गला बैठा हुआ है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. श्रीचरण, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? श्रीचरण, थोड़ा मैनेज करो आज के दिन. श्रीचरण, श्रीचरण. Sir, it's clearly audible. Yes, sir. हाँ, sir. You can increase your volume if you can't hear it. हाँ. What if it's at this maximum? श्रीचरण, आपको आपके फ्रेंड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके डिवाइस का वॉल्यूम इंक्रीज कर दो अगर आवाज नहीं आ रही है तो. ठीक है Sir, and you can also wear earphones for louder volume. हाँ. सर मैं विदाउट ईयरफोन्स सुन रहा था सर. वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था सर, इसलिए ईयरफोन्स पहना सर. ठीक से आ रहा है सर वॉइस. थैंक यू. Yes, sir. सर थक गए सर? थक गया क्योंकि जिस स्पीड से हम जा रहे हैं ना, सर पहला क्लास है. सिलेबस खत्म होगा ही नहीं. ठीक है, वही सर. चलो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. ये थोड़ी थोड़ी बातें बीच बीच में कम करनी पड़ेंगी. ठीक है. हाँ सर. हाँ. सर और एक डाउट है सर. बोलो, आपको डाउट है कौन सी बुक में लिखना है? सर हाँ बोल के. सर बुक का नहीं है सर. सर. डाउट पूछ लेना सर. सर डाउट पूछ लेना. सर बुक समझ आ गया सर. सर मैं इधर 1 लिखा हूँ ना सर, साइड में सेकंड क्वेश्चन लिख सकता हूँ सर, इधर ही राइट साइड में. वाह क्या नीचे लिख दो ना. वाह नीचे लिख दो. Sir, can you explain this question? हाँ, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वाह क्या सारे मस्त क्वेश्चन डाउट है. का इंतजार कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ. एक चीज ध्यान रखो, कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं सर 100 पेजेस की बुक यूज करें 200 की यूज करें, सर ब्लू पेन यूज करें कि ब्लैक पेन यूज करें, सर किस में लिखे? लिखे सर, ऊपर लिखे कि नीचे लिखे? अरे भाई साइड में लिखेंगे. सी, अभी आप बड़े हो गए हो, अभी आप क्लास 8 में आ गए हो, अभी आप जहां चाहे वहां लिख सकते हो. द थिंग इज बस लिखो. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, 100 पेजेस में नहीं लिखना है, 200 में लिखो. 200 में नहीं लिखना, 100 में लिखो, चलेगा, बस लिखो. सर रिलैक्स. सर रिलैक्स. ऑल सम्स लेना चाहिए. हाँ, yes, I am relaxed only. I am relaxed. I agree. I am completely relaxed. But Sir, class is going to end, sir, in this time. Please, sir. हाँ, तो पढ़ेंगे कब हम? Sir, that means you spent. चलो अब इधर ध्यान दो सब, एवरीवन. हाँ चलो, ये -1/2 तक सबको क्लियर है? पहले मैं वापस समझा रहा हूँ. प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ नाउ.
-3/2, अगर -3/2 को आप सिंप्लीफाई करके लिख रहे हो -2 1s are 2 + 1 3, then it is wrong. Why it is wrong? Because if you will simplify this will be -1 × 2 plus 1/2. Niketan, please mute yourself ना. So this is -2. सर हाँ बोलो क्या है, बोलो. सर मैं इसको एक बार ट्राई कर सकता हूँ सर आंसर. करो, आराम से ट्राई करो. एंड जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब बीच में डिस्टर्ब मत करो. एंड में पूछो. क्लियर? आराम से ट्राई करो. हाँ रोहित, सर. चिंता मत करो, ट्राई करो, बुरा मत लगाओ. ओके नाउ सो ओके, बेचारी देविका थक गई इंतजार करते करते. डोंट वरी देविका, अभी The same year, sir. हाँ आदर्श भी. हाँ. मेरा गला और खराब हो गया ना, मैं पुलिस स्टेशन जाके आपकी कंप्लेंट कर दूंगा. आप सबको पुलिस पकड़ने आ जाएगी. सर कितने लोग हैं सर? इतना? सबको. मेरे पास पहचान है पुलिस में. पुलिस की सर थोड़े लोग विद्यानगर से हैं, थोड़े लोग बीबी नगर, शंकरगुड़ा, पुलिस के पास सारी और फैसिलिटी कहाँ है. से आ रहे हैं? हर टाउनशिप के लिए अलग अलग कार है. आपको पीपी किट पहना के पकड़ के लेके जाएगी. ऐसा कर रहे हो ना मेरे साथ, टीचर के साथ ऐसा कर रहे हो. सो -2 + 1 divide by 2. -2 + 1 is -1/2. Is this clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. So minus. So sir, what will be the answer? सर -1 Answer integer 1/2. -1/2. आंसर बता रहा हूँ. पहले इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ सर. Yes sir. सर हो गया क्लियर. थैंक यू किशोर, विल डू दैट. चलो अब इधर ध्यान दो, सबका ध्यान इधर. अब इसको सॉल्व आपको कैसे करना है समझो. Now, can I write 2 2s are 4? No सर sir. नो सर. No. No sir. 2 - 2s are -4. No, No sir. No, Yes no, sir. no, Yes no, sir. sir. Yes Yes, sir. sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Because -4 is smaller than -3. 4 - 3 1. तो इसका आंसर आएगा -2 इंटीजर 1/2. चेक. मैं आपको समझा रहा हूँ, वेट, आसान भाषा में भी समझा रहा हूँ. ये आपका हो जाएगा -2 × 2 + 1/2, which is nothing but your -4 + 1/2, that is -3/2. Clear? Sir, yes. सर हाँ सर, बहुत अच्छे से समझाया सर. सर हम लोग माइनस को बाहर रखकर ब्रैकेट में डाल सकते हैं. Yes, Shravya, wait, I'll explain. So this is something higher level. पहले इसको भूल जाओ. Can you write सर like मेरे को ठीक से समझ आ गया सर. -2 इंटीजर 1/2? No. सर मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं निकाला सर. सर हाँ सर. नहीं निकालना है, लिखना है भाई. स्क्रीनशॉट नहीं निकालना है. लिखने का टाइम मैं दूंगा. इधर ध्यान दो. सर वो क्वेश्चन है ना सर, 1 2 3 4 5, वो उसका. निकालो, स्क्रीनशॉट ले लो. 1 2 3 4 सर 5. थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम. सर पता चला. ठीक है. सर मुझे तो पहले ही पता चल सर गया. आप ही बोल लिख रहे दिया. थे ना सर? Sir, from last year we were doing like this only, sir. Like हाँ, sir. -3/2 is equals to minus -1 1/2. आप यार गलत कर दिया. किसी No one told us that it's wrong. but now I am telling you it is wrong. सर बोल रहे हैं ना, सुन लो. सर सब लोग बात कर रहे And थे, the मैं cell. सेकंड क्वेश्चन भी लिख दिया. सर प्लीज सर सेम सर, सेम सर. मैं थर्ड शुरू कर रहा हूँ. प्लीज म्यूट एवरीवन. हाँ सर. Sir, I have a doubt. Sir, if in test this question will come, so the method we have to use to get -2 1/2. So how do we use the step? Means that division 1. Yes, good doubt, Akshit. That I will explain now. Just a minute. हाँ श्राव्या रुक जाओ. हाँ श्रीचरण रुक जाओ. मुझे सबको बैलेंस करना होता है. So from now onwards we are making one rule for your class. You all will be muted. जब आपको बोलना होगा raise your hand. I will unmute and I will ask you. Okay? Is this clear? Now अब मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसे आता है. You are telling कि सर हम लास्ट ईयर ये पढ़ चुके हैं बट किसी ने बोला नहीं.
कि ये रॉन्ग है। अब लास्ट ईयर मुझे पता नहीं कि आपकी बुक में एग्जैक्टली क्या दिया था या क्या है, क्लास 7 का बुक मैंने नहीं देखा है, बट बिलीव मी इट इज रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। यहाँ तक क्लियर है पहले, हाँ या ना? सी अब इसको कैसे लिखना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। when you have to simplify this in exam, how you can convert this to this? पहले माइनस को न्यूमिनेटर में दे दो। कैन यू राइट -3 डिवाइड बाई 2? yes or no? right, can you write -3 डिवाइड बाई 2? just yes or no टाइप इन चैट बॉक्स, क्योंकि अभी आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे। या पार्टिसिपेंट बॉक्स में yes पे क्लिक करो। चलो, नाउ डू यू नो द नंबर लाइन? नंबर लाइन में 0, -1, -2, -3 यू नो, करेक्ट? हाँ या ना? चलो, अब इसको आपको लिखना है -3 के लेफ्ट साइड में जाना है। अगर ऊपर आपका -4 है, -4 के लेफ्ट साइड में जाओ, -5 के लेफ्ट साइड में जाओ। अब -3 के लेफ्ट साइड में आप कहाँ तक जाओगे? यू हैव टू गो टिल यू कैन फाइंड योर मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर। चलो, 2 का मल्टीपल कौन सा होगा? क्या -4 2 का मल्टीपल है? हाँ या ना? Please give me some response. -4 is multiple of 2 or not? So can I write -3 as -4 plus 1 divide by 2? Yes or no? -3 is nothing but -4 plus 1 divide by 2. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? -3 को -4 plus 1 लिख सकता हूँ। Correct है everyone? Now see here. Can I give this 2 to both of them? -4 by 2 plus 1 by 2. Now -4 by 2 will be -2 plus 1 by 2. So it is nothing but your -2 integer half. पता चला? युक्ति is asking sir how did we get -3 by 2? युक्ति, ये previous question का आंसर है ना -3 by 2? previous question का आंसर है -3 by 2. Is this clear everyone? Is this clear? सबको पता चला? हाँ या ना? आसान है, मस्त कंसेप्ट है। अभी थोड़ा लग रहा है क्लास 7 से क्लास 8 में आ गए। क्लास 7 में जो जिसको सही समझ रहे थे वो भी गलत निकला, जिसको गलत समझ रहे थे वो भी सही निकला। हाँ या ना? Yes, Soumya, ask me your doubt. Sir, is this rule available for every type of the situation? Yes, for every negative integer this situation is there. Okay. Okay, ma'am. Okay, sir. Thank you. Sir, because I thought that it's for this one. Okay. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ओके, चलो अब सबका ध्यान इधर। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे। ये बाकी के क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। इसे नोट डाउन कर दो एवरीवन। सी, in the beginning and in the end, I will give you permission to unmute yourself. In the beginning and in the end, I'll give you permission to unmute everyone. Okay. Yes, sir. But बीच में जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप अनम्यूट नहीं हो पाओगे। तब आप हैंड रेज करना, जो भी डाउट होगा तब अनम्यूट करूंगा। ठीक है सर, इसको भी रेगुलर बुक में लिखना है होमवर्क? सब रेगुलर बुक में लिखना है। ओके सर। हाँ श्रीचरण, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी चीज डिस्कस करेंगे, होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। चलो, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No doubt, sir.